तीन एम्बुलेंस आगे एस्कॉर्ट करके रखी हुई हैं पहले से, और पीछे से अब हलचल बढ़ी है। पुलिस ऑफिशियल जो उन्हें लेने गए थे वो अब आगे आ चुके हैं। थोड़ा सा और कैमरे को जूम इन करिए थोड़ा सा। और जो एम्बुलेंस, छोटी एम्बुलेंस अंदर गई हुई थी, वो छोटी एम्बुलेंस की हलचल अब वहां से बढ़ी हुई है। पीछे की साइड में कैमरा लेकर जाइए हरिंदर, थोड़ा सा पीछे जूम आउट करके जूम इन करिए यहाँ पर। और अभी वहां पर हलचल, एक और जो बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जितने यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, इन्होंने हाथ हिलाकर हवा में मुट्ठी बांध कर इशारा किया है, यानी सफलता मिलनी शुरू हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर सिलक्यारा टनल के अंदर से। Abhishek getting us the big news of the hour. 4 workers have been rescued safely. Abhishek continues to tell us what's going on there. Abhishek, over to you. सबसे बाहर निकाल लिया गया है और कुछ ही देर में यहां से बाकी के 3 और वो 4 मिला के अब उन्हें निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए हरकत बढ़ गई है, एक्शन शुरू हो गया है, एम्बुलेंस खड़ी हो गई है और टनल में लगातार काम शुरू हो गया है। पहला शख्स जो बाहर निकल के शर्मवीर आया है उसका नाम विजय है और बाकी के 3 को निकाल लिया गया है और उनके भी नाम अब कुछ ही देर में पता चल जाएंगे। और उन्हें सबसे पहले एम्बुलेंस जो बाहर खड़ी हुई है, उस ग्रीन कलर की एम्बुलेंस में उन्हें बाहर लेके आना शुरू कर दिया गया है। So one of the 4 is named Vijay and he's trying to get to the bottom of more details. But you do see a lot of activity there. On the left side of your screens, the ambulances are parked right outside the mouth of the tunnel. And a lot of people really around the ambulance, whether or not, some of these workers who've now been pulled out, they're being transported to hospitals via these ambulances. That's something we're going to try and find out. But yes, those are the live visuals we continue to keep up with. Remember, these people have been in this collapsed portion of the tunnel for 17 long days. And after those 17 long days, after having faced those difficult conditions today, finally, they've been pulled out. They're being pulled out. 4 of them have been pulled out already via the wheeled stretchers, with ropes attached to them by the help of NDRF officials who are currently at the spot. Our sharp focus, of course, remains on how smooth the entire operation is going to be. The NDMA officials have made it clear that the entire process could last for about 4 hours, anywhere between 3 to 4 hours. It may take the entire night, they say, to finish the ongoing rescue operation. But the good news being that the technical challenges have been overcome. So that's the big relief at this point in time. And you see the kind of crowds gathered there really. Rakesh is joining us with the latest. Let's cut across. वाइटल्स की जांच होगी, इसके बाद शायद उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाए। लेकिन ये तस्वीर, जो भी एम्बुलेंस के अगल बगल थे, उन्होंने ताली बजाकर अभिवादन किया है। यानी जिस घड़ी का इंतजार था पिछले 17 दिनों के बाद, वो घड़ी अब आ चुकी है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की इबारत लिखने लगा है, और इबारत ऐसी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने तमाम मुश्किलें देखी, एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसने जिंदगी में उम्मीद तो बनाकर रखा, लेकिन उसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए कि कभी लोगों को निराशा भी हुई, लेकिन हौसला जज्बा नहीं टूटा। एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें शुरुआत के 12 दिनों में जो श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, उनके पास ना तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था, ना तो खाने पीने का कोई साधन था। वो मुश्किल हालातों में सर्वाइव करते हैं, और 10 दिनों के बाद और 10 दिनों के बाद उनके पास पहला कम्युनिकेशन होता है। फिर उन्हें फूड आइटम्स पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा जूम आउट करिए और फिर उसके बाद दिखाइए कि हलचल क्या हो रही है, अगल बगल लोगों की क्या हलचल है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। हरिंदर, जरा तस्वीरें दिखाइए। एनडीआरएफ के लोगों ने इस एम्बुलेंस को घेर के रखा हुआ है, और ऐसा फ्रेम बनाइए कि पीछे की भी जो हलचल है वो दिखाई दे। फिलहाल देखिए सबका ध्यान एक और पीछे की तस्वीर जूम इन करिए हरिंदर। पीछे जो छोटी एम्बुलेंस थी, देखिए वो बाहर आते हुए जो रैंप के बगल में खड़ी की गई थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, ऑपरेशन जिंदगी। थोड़ा सा जूम आउट करिए, ताली बजाकर लोग दौड़ रहे हैं उस एम्बुलेंस की ओर, और ये तस्वीर बता रही है कि ये ऑपरेशन जिंदगी सफलता की पहली कहानी लिख चुकी है।
श्रमिकों का बाहर निकाला जाना शुरू हो चुका है। इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 7:57। 7:57 पर मुस्कान की यह पहली तस्वीर, और निश्चित तौर पर उन 41 श्रमिकों के परिवारों ने जो टाइम्स नाउ भारत के जरिए लगातार इस तस्वीर को देख रहे हैं, हमारी लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के कवरेज को देख रहे हैं, उन्हें यह निश्चित तौर पर सबसे बड़ी राहत की खबर मिली होगी। और जरा जूम आउट करके पहले बाहर की तस्वीर दिखा दीजिए हरिंदर, जरा जूम आउट करिए, एकदम बाहर निकालिए फ्रेम को, बाहर निकालिए। ये बगल में देखिए सारी एम्बुलेंसेज स्टैंड बाई मोड पर, सभी एम्बुलेंसेज को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। 1200 मीटर का ये स्टेज रोड देखिए, करीब 30 एम्बुलेंसेज। Ambulances parked right outside the opening of the tunnel. There are about 10 more ambulances which are parked at a distance, is what our reporters have been telling us. Now, this most certainly is big news coming in, great news coming in for the family members of those who were trapped for the last 17 years, for the entire nation that was literally praying for the safe return of these 41 brave men. And like Abhishek just highlighted and Rakesh has been telling us, we could see some of those men wearing yellow helmets, some of the rescue officials clap and cheer for the ones who have made it out of the tunnel. 4 workers have been pulled out in the latest, remember, after 17 long days, and nothing less than an underground prison, as we've been highlighting. The rescuers, remember, the last few hours were clearing the final few meters of the debris using the rat hole mining technique, using manual drilling methods, and they were laying pipes in the tunnel to take out the workers. All of that stood completed just a few minutes ago, and they quickly swung into action, and they've begun pulling out the trapped workers via the wheeled stretchers. They've been using this strategy the last few minutes, the NDRF personnel pulling out the trapped workers with the help of wheeled stretchers tied to ropes. Remember, this happened on the 12th of November. From the 12th of November to now, what a journey it has been, and how many difficulties these 41 people may have saved, only they know, and only will they be able to share it with the entire country once they're out, once they've healed, once proper medical attention is given to them. In a few days, perhaps, we'll be hearing all of those stories from these brave men. This happened on the 12th November, like I said, when a section of the tunnel between 205 and 260 meters from the Silkyara side had collapsed. And ever since, we've seen the rescue teams engaged in the non-stop operations to rescue them. Close to, let's say, the 12th or the 13th day, there was a little hope that they may be saved any day now. But given the kind of technical challenges, it did become a difficult task. Today in the morning is when we heard of the good news of how it was about 5 meters left, the last 5 meters before the rescuers could reach the trapped workers. Finally, they're there, and one by one, they're being pulled out of the tunnel. Those are the latest visuals we keep up with. The right side of your screens, you can see how the manner in which the workers trapped inside are being pulled out one by one. This may, though, take some time. As the NDMA officials have also been highlighting, it may take about 3 to 4 hours to bring all of them back, to pull them all out. Medical aid, as we speak, is being given to some of them being taken to the ambulances parked right outside the tunnel. As you can see, apart from this, remember how we've been clearly told, and our reporters have been suggesting, that a temporary medical facility has also been set up inside the tunnel, right at the entry of the tunnel, where immediate medical aid is being given to those who have made it out of the tunnel. So those are the kind of details that are now trickling in. 12 workers in the latest have been rescued. So from 4 to 12, the action is only picking up. The nation today is so very relieved at the work, the kind of bravery that these 41 men have shown, and one after the other, they're making their way out of the tunnel. From 4 to 12 now, 12 workers in total have been rescued. And that's why we see the kind of activity we are on the left side of your screens, where the live visuals are now currently coming in from right outside the mouth of the Silkyara tunnel side. You see ambulances parked, a lot of rescue officials currently engaged in those efforts, and one by one, each of them is being pulled out. The right side of your screens, of course, are visuals of, inside the pipe. That's the manner in which the workers are being pulled out. We've been talking about the strategy that is being adopted to, remember, they're being pulled out. The trapped workers are being pulled out with the help of wheel stretchers, which are tied to ropes.
This was very clear since the very beginning. Of course, at the end of the rescue efforts, we did see how instead of the auger machine, the rescue team had to shift its focus to manual drilling. That was the only option left with them. They were keeping an option of the vertical drilling open as well till earlier today, when they finally decided it's going to be manual to reach to the ones trapped on the other side. And finally, a few minutes ago, we did see that happen. We did see the rescuers finally reach the trapped workers. के नारे भी यहाँ पर सुनाई दिए हैं। हर हर महादेव के भी नारे अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं, जो हम तक जानकारी पहुंच रही है। और प्रॉपर मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। टनल के अंदर जो देखिए, टनल के अंदर जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, जो 6 श्रमिक बाहर निकले, वहां पर उनके वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं। और पहले ही हमने दिन में बताया था कि 8-8 श्रमिकों को बाहर निकालकर फिर उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। और देखिए आसपास यहाँ पर पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है, पटाखे बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यहाँ के आकाश में जो तस्वीरें अगर हम तक पहुंचेंगी तो वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये ऐतिहासिक मौका हिंदुस्तान के इतिहास में निश्चित तौर पर, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इतना मुश्किल ये रहा पिछले 17 दिनों में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी सफलता की कहानियां लिखना शुरू कर चुका है। तमाम एजेंसियां अपनी सफलता की बातचीत कर रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। धीरे धीरे एम्बुलेंसेस बैक करके टनल के गेट की ओर ले जाई जा रही हैं। और जो श्रमिक निकाले गए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री धामी और वीके सिंह इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में खुद मौजूद हैं, वो इन श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं। वहां पर जो डॉक्टर्स और मेडिकल की टीम मौजूद है, वो उनके बॉडी वाइटल्स को चेक कर रही है। उसके बाद इन श्रमिकों को इन एम्बुलेंसेस के जरिए लेकर जाया जाएगा चिन्याली सौंड उन्हें रखा जाएगा। 41 बेड वहां पर रिजर्व करके रखे गए हैं। वहां पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम लगातार मौजूद है। टोटल 6 श्रमिक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि कुल 6 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं। सभी आराम से बाहर आ रहे हैं। और जब वो टनल से बाहर निकल रहे हैं तो ये भी जानकारी है कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है कि गाड़ियों को कैसे लाइन अप करना है। ये जबरदस्त तरीके से हलचल सिलक्यारा टनल के बाहर, उम्मीदों का निकास द्वार, इसलिए क्योंकि यहां से जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकल रही हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। Rakesh there reporting non-stop live from outside the rescue site, and look at these pictures on the right side of your screen. So heartwarming to see workers who were trapped inside for the last 17 days now slowly sliding out of it. And remember, these are ordinary people that we are talking about, people without any influence on either decision makers or without any approach. Yet the government pulled out all stops and extended and mounted this daunting rescue effort that is finally concluding with these pictures that are beaming straight from Uttarakhand, and you're seeing them live on Times now. Union Minister VK Singh also there. He has been going there on and off, and since this morning he has been at the tunnel site monitoring personally the rescue operations. Let's also try and bring in Abhishek, our colleague, who has some of the family members of the laborers who are stranded there. Abhishek, आशुतोष, आपके पास कुछ वो लोग हैं जिनके परिवार वाले अंदर फंसे हुए थे, 17 दिन तक अंदर फंसे हुए थे, लोग पूजा प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, और फाइनली 17 दिन के बाद 41 लोग जो फंसे हुए थे, एक के बाद एक बाहर आना शुरू हो गए हैं। Okay, we will go to Ashutosh and Rakesh in just a bit, but look at these pictures. The reason they are important, and the reason this is an important rescue operation, is because the government has sent a message to all Indians that no matter what you do, reactions coming in, let's cut live. लोहा सरिया जो भी आया सब कटा है और सब निकला है, सब कुछ सक्सेसफुल हो गया सर। How can you explain your expression? Hi, how are you? Mr. Krish. Come here often. Mr. Krish. You can say something, sir. So the first 3 people just started to come out, and it's going to go smoothly forward now. That's what I'm going to say. Okay. How many laborers? 3 out so far. Yes, sir.
Cooper, the micro-tunneling expert who's been supervising the operations there, relieved faces, some even smiling, and obviously one can understand the kind of emotions that they are going through. There you have the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, at the rescue site along with Union Minister VK Singh. More reactions. That's it. Okay. How many? Three out already. 3 out already, and they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir, including CM. Yes. And you, sir, and you, sir. Yes. Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. You can speak something. अब एक आपका हो गया. Now, all through the last 17 days, more reactions coming in. गले मिल लेते यार, होता हमसे सब बड़े. हाँ, स्वागत पूरा. लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था. हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला. इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल था, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है. ये अपने जान पे खेल. हाँ. आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरा रामदास सर, बोलिए. आप बोलिए. ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से. सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम सब लोग काम. देखिए, सबसे 4 लोगों को कर लिया गया है. 4 और लोगों को निकाल के अभी उनका चेकअप चल रहा है. उनका ऑक्सीजन पल्स वगैरह चेक की जा रही है, बीपी चेक किया जा रहा है. उसके बाद उनको डॉक्टर का चेकअप होने के बाद एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा. बाकी 4 बचे हुए 4 का फिर दोबारा जो और डॉक्टर हैं वो उनके चेकअप्स करने में लगे हुए हैं. जैसे जैसे जिसका चेकअप हो रहा है उन्हें एम्बुलेंस में बैठा के आगे के लिए रवाना करने के लिए सभी एक्शन मूड में एम्बुलेंस को आगे कर दिया गया है. जी नाविका जी. Abhishek, Bartha, Rakesh, our team of reporters reporting non-stop live from the rescue site, and these are now signs of the workers being taken to the Chinyalisore Community Health Center. All the ambulances are ready, and they had been ready for a long time. Ever since 10:30 this morning, ambulances were kept on standby. There were paramedics there outside the main entrance. There was also a green corridor that was personally maintained and supervised by the Uttarakhand. तैयार है और उसको एस्कॉर्ट करेगी आगे एक गाड़ी. ये देखिए, ये कतारें आप देख सकती हैं टनल के अंदर. टनल का ये प्रवेश द्वार उम्मीदों का निकास द्वार आज इसलिए क्योंकि यहां से ये श्रमिक अब बाहर निकलेंगे. एक छोटी एम्बुलेंस, जरा जूम इन करिए, एक छोटी एम्बुलेंस लगातार अंदर जा रही है बैक साइड से ही और तुरंत बाहर लेकर आ रही है श्रमिकों को और वो उन्हें ड्रॉप कर रही है इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तक. वहां पर मुख्यमंत्री धामी खुद उन श्रमिकों को रिसीव कर रहे हैं. उनके बॉडी वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं. डॉक्टर्स उन्हें बता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट और साथ ही जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं. लेकिन जो तस्वीर आई है वो तस्वीर बता रही है कि जो अंदर श्रमिक थे उनके हौसले कितने बुलंद थे. इन 17 दिनों के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान. जाहिर सी बात है, ये बाहर निकलने की मुस्कान तो है ही, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने काम किया, जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी गई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, ये बाकायदा उन लोगों को लूप में रखा गया. और एक और चीज मैं बता दूं, तस्वीरें तो नहीं दिख रही हैं लेकिन आसपास के इलाकों से बम और पटाखों के गूंजने की आवाजें आ रही हैं. यानी आसपास के गांव के लोग आतिशबाजी कर रहे हैं. जैसे उन्हें टेलीविजन के जरिए यह खबर मिली कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो रहा है, श्रमिक बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं. ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा जूम इन करिएगा. एम्बुलेंस के गेट पर लगातार एक एम्बुलेंस पीछे जा रही है, वो बाहर आ रही है. एक बार फिर से थोड़ा सा जूम आउट करिए और जूम इन करिए. जो एम्बुलेंस अंदर गई थी, जो एक छोटी एम्बुलेंस को बाकायदा पिक ड्रॉप के लिए रखा गया है, वो अंदर रैम साइड से, यानी जो अंदर लोहे का पाइप है जहां से श्रमिकों को निकाला जा रहा है, वहां से उन्हें पिक करके इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तक लेकर आ रही है, उन्हें यहां ड्रॉप कर रही है और वापस जा रही है. तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर. और देखिए, एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए भी तैयार है. ये जो दोनों एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और ये आगे की ओर बढ़ते हुए इस टनल से बाहर निकलते हुए इन्हें निकाला जाएगा अब चिन्यालीसोर की ओर. पूरा ये 35 किलोमीटर का रूट पूरा देखिए. अंदर ताली भी बजा रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, थम्स अप कर रहे हैं. ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन अब सफलता की कहानियां लिख रहा है. चिन्यालीसोर करीब 35 किलोमीटर का स्ट्रेच, ग्रीन कॉरिडोर, यानी कोई इस दौरान ट्रैफिक इस रूट पर नहीं रहेगा. वहां पर इन्हें लेकर जाया जाएगा जहां पर डॉक्टर्स की एक स्पेशलाइज्ड टीम है. जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर एयर स्ट्रिप भी है और अगर जरूरत पड़ेगी कि किसी को एयरलिफ्ट करना है, चिनूक वहां पर तैनात है. वहां से ऋषिकेश
एम्बुलेंस आसानी से उन्हें एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा सकता है। धीरे धीरे ये एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। थोड़ा सा जूम आउट करिए, टनल के बाहर आप देखिए, और अंदर ही एम्बुलेंस के अंदर भी जो श्रमिक आ गए, चूंकि 12 की संख्या में श्रमिक बाहर आ चुके हैं, तो वहां पर अंदर भी बॉडी वाइटल्स चेक किए जा रहे हैं। ये पूरी एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, जितनी 41 एम्बुलेंसेज यहां पर खड़ी हैं, और उसकी वजह यही है कि रास्ते में किसी तरीके की इमरजेंसी आए, कोई जरूरत पड़े तो पूरी चिकित्सकीय सुविधा उन्हें आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर। लगातार अब श्रमिकों का बाहर निकलना लगातार जारी है। लगातार क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, वो अभी विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे? हाँ, आधे घंटे के अंदर। हाँ जी, चलिए। The rescue operations finally concluding successfully as we speak. One worker after another sliding out of that tunnel, the makeshift tunnel, or the exit way as experts have called it. And this was not without a fair share of high drama and also ups and downs. For 2 weeks now, for 17 days to be precise, viewers, 41 construction workers were trapped. Multiple agencies were at work to rescue them, and this was a battle between hope and despair. Efforts to resume the rescue work were sometimes halted because of things beyond the control of people who were there. You remember what happened with the plasma cutter which was flown in from Hyderabad to Uttarkashi, but the delays caused by some other setbacks actually jolted and hampered the rescue effort, perhaps the speed of the rescue effort, and there were many uncertainties. This operation, this daunting rescue operation, an audacious one, was riddled with uncertainties, and many believed that the workers were the trapped workers. Also, the agencies involved were in for a long haul, but finally, after 17 days of tirelessly working on multiple plans, there were at least 5 plans, 5 simultaneous rescue plans which the workers were constantly on to pull out the 41 trapped people. And the good news is that all of them are said to be safe and in good mental space. There are also 10 beds which have been set up right at the opening of the tunnel. 10 hospital beds have been set up. There's a team of expert doctors to personally supervise to ensure that first aid, if at all required, or anything else for those who are critically are said to be or diagnosed as critical, or perhaps if the doctors advise that they will need some kind of expert supervision, they will be immediately airlifted. There's also an IAF Chinook helicopter on standby. But what Rakesh Pandey, our colleague who's reporting live from the rescue site, was telling us that one by one, as these workers begin to come out, Chiniali Sor Community Health Center is where they are headed. It's about 30-35 kilometers from the tunnel site, but it will not take more than 10 to 15 minutes because of the green corridor created by the Uttarakhand police. But just to tell you about the body language of both sides. On one side, you have the workers who've come out after 17 days and interacting with the Uttarakhand Chief Minister there, Pushkar Singh Dhami. Also in the frame is Union Minister VK Singh. The worker who's been pulled out after 17 days is wearing a yellow safety cap. Their NDRF personnel also in their battle gear. And just by the body language, and I'm no expert, but he looks composed. He does not look... he looks relieved, and obviously so. And so does the Chief Minister. He has a bright white smile on his face because it has been a daunting task for the Chief Minister personally also. There have been multiple occasions where he has had a phone call or a telephone conversation with those who've been trapped inside. On the left are pictures of the ambulances, one after the other, lined up, parked outside the main entrance of the tunnel. And as the workers are being pulled out, the paramedics are checking them, and then they are being put into ambulances
so that they can be taken to the Chinyalisore Community Health Center. We've opened our call-in lines, viewers. We want to hear from you. There's a lot of commentary around this rescue mission, but I can tell you one thing. The message is very simple and it's a strong one. Let's in fact listen to reactions coming in. आने वाले हैं निकल गए जी सब लोगों ने बोला था कि बहुत जल्द आएंगे बाबा की कृपा है 3 दिन की कृपा वो बाबा की कृपा है भाई हमारी कोई कृपा नहीं है बाबा की कृपा है सब पे आशीर्वाद बस बोलो आप लोग बोलो आप क्या कहेंगे बताइए सर हम तो सब पे यही कहेंगे कि बाबा Let's go to our viewers who are joining us. Let's go to our viewers who are now joining us. We have Mr. Shiv Shankar joining us from Bengaluru. Sir, good evening. Go ahead. Sir, please mute the television set. We can hear you clearly. Please go ahead. Okay, we'll try and connect with our viewers. The numbers flashing at the bottom of your screen. But the message that I was trying to tell you, and that is an important one. The government at the center, as also the multi-agency operation, has reassured the people of the country that no matter what you do, what you are, what strata of society you come from, if you are stranded, if you are in trouble, the government will do everything it can, pull out all stops to help you. That is what we've seen in this 17-day long operation. As we speak, reactions coming in, people who've gathered at the rescue site speaking. खुशी में जो है उनके बाहर आने की खुशी में स्थानीय लोग हैं मैं बड़कोट से हूँ नगर पालिका बड़कोट से और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं दिवाली वाले दिन से वो अंदर है अब दिवाली भी मनेगी छठ भी मनेगी बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं पटाखे फोड़े जाएंगे मिठाइयां आपके सामने बंट रही है अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे बहुत बड़ी खुशी बिल्कुल सर एक बार हमारे साथ आइएगा संतोष तस्वीर दिखाइए यहाँ आचार्य जी थोड़ा एक मिनट देश Okay, the locals also turning out in large numbers at the rescue spot and they are speaking. Let's start live. जब हैंडओवर करेगा हम स्टेट को लेके जाएंगे तो खुशी आप लोगों को भी होगी बहुत खुशी आप सबको बधाई हो सबको धन्यवाद यहाँ का प्रशासन राज्य सरकार केंद्रीय सरकार और हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट सबका प्रयास है सबकी दुआ से लोगों का मुक्ति हो गया सबसे अच्छा चीज Okay, we have a viewer Arman now joining us. Sir, good evening. You're on Times Now. Please go ahead. Yeah, so first of all, I would like to congratulate the government on this huge achievement. So I am a student and as per my understanding, this is a very big achievement for the government as, rescuing 41 workers. People would have imagined that they would have been ignorant or something like that, but we should be very proud of our nation. All the agencies are prepared to function in an efficient manner. This is just mind-blowing to see. And definitely, we have seen the one of a kind instance, actually, I should say, over here, where everyone is supporting. The entire nation has come together for 41 people who were stuck in this tunnel. I wish them a very best time ahead. Thank you for connecting, Arman. Sunil now joining us from Bengaluru. Sir, good evening. Hello? Yes, ma'am, we can hear you. You're on Times Now. Please go ahead. Yeah, extremely happy to see all the workers slowly moving out of the tunnel. I was keenly watching Times Now and was worried in between, whether it will happen early or will it get delayed, because in between we had some issues, right? But extremely happy. I think the families, all the prayers of all Indians are with them. That is one reason I feel all are out today.
and the hard work and the team effort and the coordination done by all the agencies are much appreciated. And our sincere thanks to all of them who have put a lot of effort behind it, sir. I feel today there will be Diwali celebrated in every household. Absolutely. Sense of joy, celebrations, they're breaking out. And more than that, a sense of fulfillment, because finally the prayers have come true, the efforts have paid off, and 41 people who were trapped for last 70 days are finally out. More than 18 have come out. More are on their way. And in about 45 minutes to the next 1.5 hours, all the 41 will be brought out. Gaurang now joining us from Pune. Sir, good evening. You're on Times Now. Yes, sir. Thank you so much. Good evening to you too. Today I really feel happy about that the workers are finally getting rescued from the tunnel mishap. And I think other workers who helped all the team, the NDRF, SDRF, I would also like to tell them a lot of thanks, because their efforts should also be considered. And finally, I mean, all the prayers are being heard by the God, and really like a immense happiness. And I just wish all of them to be happy, contentful, and healthy. Their health is of main concern right now. How they must have lived for say the 17 days. And just very much thankful today that they are getting rescued. Really happy for them. After finally so many days. Share that sentiment, Gaurang. Thank you for connecting, sharing your thoughts. I must mention that the government did everything it could to keep up the spirits of the 41 trapped by sending it food, by communicating with them regularly. Our colleague Ashutosh spoke to family members of those trapped in Mirzapur in Uttar Pradesh. Here's what they said. 17 दिनों बाद इस परिवार के आंगन में आज खुशियां फिर से लौटी हैं, क्योंकि जो इनके परिवार का एक इकलौता कमाऊ सदस्य था अखिलेश, उसकी सकुशल वापसी की अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। और उसी की जो आने की खुशी की तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पे नजर आ रहा है। 17 दिनों बाद लोगों के चेहरे पे खुशियां आई हैं और आप बाकायदे जो परिवार के लोग हैं वो शंखनाद कर अपने बेटी के स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस खास पल के लिए हर किसी का इंतजार था, और यही नहीं, न सिर्फ घर के बाहर बल्कि घर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। यानी जो लोगों की दुआएं थी, जो उठते हुए हाथ थे, अब उसका जो असर है वो धीरे धीरे दिख रहा है। 17 दिनों बाद चेहरे पे खुशियां दिखने जी बहुत हमारा भांजा है, हमारे भाई भी वहाँ विजय कुमार राय है, हमारा नाम राम जन्म राय। As we speak, the latest coming from the rescue site is that 22 workers have been rescued from the tunnel. And Abhishek now joining us with the latest. Abhishek, 22 worker अभी तक निकल चुके हैं। जिस खबर का इंतजार पूरे देश को था, आज उस खबर का इंतजार खत्म हो गया है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग कितने उत्साह में हैं, यहाँ लोकल जो हैं कितना उत्साह में। आगे मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। देखिए लगातार किस तरह भारत माता की जय के नारे लगातार गूंज रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि सीधे रूप से जिस बात का इंतजार पिछले 17 दिनों से हो रहा था, और 17 दिनों के बाद वो लंबा इंतजार खत्म हुआ है, और लंबे इंतजार का जो परिणाम निकला है वो बेहद ज्यादा सुखद निकला है। और निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो काम किया है, जो 17 दिन लगाए लंबे समय में जो काम हुआ है, उसका परिणाम बड़ा सुखद निकला है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अभिषेक, आप लगातार वहां पे रेस्क्यू वर्क ट्रैक कर रहे हैं इतने दिनों से, और अब दर्शकों को एक बार बस ये बता दीजिए कि ये मल्टी एजेंसी ऑपरेशन जो थे उसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। जैसे आपने बताया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लोग थे, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हाईवेज उनके अधिकारी थे, होम अफेयर्स के लोग लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, एनडीएमए, एसडीएमए, रेलवेज ने हेल्प की, आईएएफ की मदद ली गई।
देखिए, मैं आपको बता दूं, तकरीबन देश की तमाम 12 बड़ी एजेंसियां, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम राज्य सरकार की वो एजेंसियां जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये यहाँ मौजूद हैं और पिछले 17 दिन से लगातार मौजूद रही हैं, और इन लोगों के कोऑर्डिनेशन ने आज एक बार फिर ये साबित कर दिया कि देश में कोऑर्डिनेशन के चलते एक और बेहद बड़ा देश का ऐतिहासिक जो आज काम हुआ है, ये देश में ऐतिहासिक है और इतिहास रच दिया। आज इस ऑपरेशन ने ये साबित कर दिया है कि निश्चित तौर पर देश हमारा जिन हाथों में है इस समय, देश में इस बार इतिहास रच दिया। जी बोलिए अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। I think we've lost the line, but let's for a moment cut to these pictures full frame. The pictures on the right of your screen, the Chief Minister looking as elated with every worker coming out. He's personally meeting them, greeting them, asking them about their well-being and then patting them on their back as other officials escort them to the ambulance which is waiting for them. As we speak, 33. That's the big update coming in. 33 workers of the 41 stranded, pulled out safely. Others are on their way. And at the speed at which this is going, it shouldn't take more than 10-15 minutes. अभिषेक, 33 लोग अभी तक निकल चुके हैं. ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट और सब 41 बाहर होंगे. देखिए, तकरीबन एक व्यक्ति को निकालने में 2 मिनट का समय लग रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 8 लोग 15 से 16 मिनट में बाहर आने वाले हैं और उन्हें लगातार उनके साथ डॉक्टर चेकअप किया जा रहा है. चेकअप करने के बाद हॉस्पिटल हाँ सर, हाँ जी बोलिए अभिषेक, आप बता रहे हैं कि कैसे पायलट व्हीकल निकल चुकी है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार है, एम्बुलेंस एक से एक के बाद एक लाइन में खड़ी है. 33 लोग निकल गए हैं, 8 बाकी हैं. 41 के 41 अगले 10 से 12 मिनट में बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनको चिन्यालीस और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया जाएगा इन एम्बुलेंस में जो वहां खड़ी है. रेस्क्यू वर्कर्स ने हमसे बात की. दिस इज व्हाट दे सेड. सब स्ट्रांग है, बढ़िया. हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट. अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल लेते यार, होता हमसे सब बड़े. हाँ, स्वागत पूरा. लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था. हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है. अपने जान पे खेल. हाँ. Look at the smile on the face of that person in that fluorescent green jacket. One of the rescue workers is as relieved, as elated as those who've been pulled out after a 17-day gap. People who were stranded in the tunnel, and he said nothing else mattered. We had one mission. We wanted to see these people being pulled out safely, and they've done it. Rakesh Pandey now joining us live. Rakesh. राकेश, अगर आपको आवाज आ रही है, वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई है. लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और 33 लोगों को निकाल लिया गया है. जो 8 बचे हैं वो भी धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं. अभी आने वाले हैं. Okay, we'll try and go to Rakesh and Abhishek in just a bit, but celebrations all around, and there is a reason because of this daunting rescue mission. Lasted 17 days, but all is well that ends well. Sweets been distributed. The locals from this place have. कितने मजदूर हैं और कितने बाहर आ चुके हैं? 8 मजदूर हैं, 3 बाहर आ चुके हैं. 8 है, 3 बाहर आ चुके हैं. जो 3 बाहर आए उनकी स्थिति कैसी है? सब बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है. हाँ जी, एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है. हम लोग भी अस्पताल के लिए अस्पताल जा रहे हैं आप लोग? जी. और उसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम कैसे लेके? आगे एयरलिफ्ट करेंगे. एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक? यस.
Okay, that's an update there. This person who was speaking, part of the rescue team, said that in about some time from now, perhaps early morning tomorrow, all the 41 will be airlifted to Lucknow. We have our viewer Srinivas now joining us. Sir, good evening. सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गए भैया। जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे Man, now he says सब निकल गए, सब safe हैं. All the workers have been pulled out safely. Srinivas, our viewer joining us. Sir, what do you think of this 17-day long rescue mission? Hello? Hello? We can hear you, sir. Go ahead. Hello? Mr. Srinivas, if you could please mute the television set in the house and then make your point. Okay. से 41 श्रमवीरों को बाहर निकाला गया। उसके बाद से यहाँ पर भी हलचल थोड़ी सी बड़ी। आईटीबीपी के जवान हो, पुलिस हो, उनकी तैनाती है। बाहर बाकायदा बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है। और जिस तरह आप बता रहे थे कि स्पेशलिस्ट की जो टीम है, स्पेशलिस्ट की टीम जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है, टिहरी से, उत्तरकाशी से, देहरादून से। वो स्पेशलिस्ट जो यहाँ पर पहुंचते ही इन 41 श्रमवीरों की जो वाइटल्स, जो शुरुआती जांच है वो यहाँ पर करेंगे। ब्लड टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे क्योंकि 17 दिनों का वक्त बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना जो है वो मेंटली, फिजिकली इन लोगों को करना पड़ा होगा। और यही यहाँ पर देखा जाएगा कि किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी हुई है, आगे किस तरह की यहाँ पर दवाइयां देनी होंगी, किस तरह से इलाज करना होगा। 72 घंटों तक तो देखिए, 72 घंटों तक बाकायदा इन लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है ये देखने के लिए कि 17 दिनों में कितने जो चेंजेस हैं, कितने असर हैं वो। Okay, this was Bartha, our colleague. She is reporting from the Chinyalisur Community Health Center. Our team of reporters spread out, tracking all vantage points. Rakesh Pandey now. कैसे लेके जाएंगे सबको? सबको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। कितने कितने करके निकाल रहे हैं? अभी एक एक करके आ रहे हैं। एक एक करके। कितनी आसानी से आ रहे हैं सब? बिल्कुल जी हाँ, आराम से आ रहे हैं सब। और एक चीज और बताइए कि जो आपने देखा, सब लोग स्वस्थ लग रहे थे? जी जी स्वस्थ लग रहे हैं। जी जी आपने बातचीत भी करी? जी, एक दो से बात हुआ, बाकी सब तो अपने आ रहे हैं। चेकअप सबका, मेंटली चेकअप, ऐसे हेल्थ चेकअप सब देख रहे हैं कैसे। अंदर भी बेसिक मेडिकल चेकअप? जी 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 बता दीजिए। हाँ, बेसिक सब लगे हुए हैं, डॉक्टर सब लगे हुए हैं। उधर आगे है, इधर बेड वुड भी लगे हुए हैं। जी। और कितनी देर में पूरा हो जाएगा? बस मान लीजिए आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। जी जी। कितने लगभग आ चुके थे आपके सामने? अभी 20 आ चुके थे, बाकी और भी अभी निकल चुके हैं। दीजिए अपना। जी, राजेश कुमार यादव हुआ। और आप किस मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं? मेडिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल। अच्छा अच्छा, मैकेनिकल। जी जी। थैंक यू। Rakesh Pandey is now joining us live. Rakesh, और कितने देर में पूरे 41 लोग बाहर आ जाएंगे? Okay, I don't think we have Rakesh through, but viewers, I just want to make a couple of points because there's a lot of chatter also on social media. Now, contrary to common perception, many people believe that these 41 people, the workers who were trapped inside, were actually inside, a darkened chamber or a highly enclosed space, which is not correct. Now, this, and I don't have the exact numbers, but from what I recollect or rough estimates, the collapsed portion had natural light coming in, thus ruling out all rescued. All 41 people have been rescued. That's the update now coming in. Rakesh Pandey and Abhishek, our colleagues, sending us a minute-to-minute update. Now, this began at about 7:55 is when the first trapped worker was pulled out, and about 8:37, 41 people, all 41 have been rescued. It's a rescue operation of mammoth proportion, went on for about 17 days times now, has been relentlessly
reporting from the rescue site, giving you all the updates and tracking all the dimensions. Also, the multiple agencies which were involved in this massive rescue effort. Good news for the entire country. All 41 workers who were trapped inside for the last 17 days have now been successfully evacuated. They've been pulled out, and these are pictures on the right of your screen from the ambulance. Look at them as they get in one by one. They look hale and hearty. Obviously, the focus will be on their physical and mental state, but from the looks of it, okay, let's start to Rakesh Pandey joining us live. फिर से इस टनल से बाहर एम्बुलेंसेस का निकलना शुरू हो गया और जैसे ही ये तीनों चारों एम्बुलेंस बाहर निकल जाएंगी, आगे जो एम्बुलेंसेस आपको बैक करके तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो एम्बुलेंसेस धीरे से प्रवेश करेंगी इस टनल के अंदर और वहां से इन श्रमिकों को लेकर जाया जाएगा आगे चिन्याली सौंड की ओर, रास्ते की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर, काफी ऐतिहासिक तस्वीर और भावुक लम्हा। और देखिए जैसे जैसे एम्बुलेंसेस आगे बढ़ रही हैं, लोग तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं इन श्रमवीरों का, इन कर्मवीरों का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपने हौसले को बनाकर रखा, जज्बे को बढ़ाकर रखा। और एक वक्त की तस्वीर याद आती है कि जब लगातार ऑफिशियल्स बातचीत करते थे तो वो ये कहते थे कि हमें पता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, हम चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे, आप रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 एम्बुलेंसेस बाहर निकल चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है, सिलक्यारा टनल्स के बाहर 6 एम्बुलेंसेस निकल चुकी हैं और लगातार जैसे जैसे जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर जैसे ही बॉडी वाइटल्स चेक कर रहे हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो जैसे ग्रीन सिग्नल दे रही है, तुरंत उन्हें वहां से एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है और यहां से रवाना किया जा रहा है चिन्याली सौंड की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। और देखिए जैसे 6 एम्बुलेंसेस बाहर निकली, इधर की ओर हरिंदर दिखाइए, ये एम्बुलेंस बैक होकर टनल के अंदर जा रही है, 2 एम्बुलेंसेस बैक। If you want to learn Python for a career in data science, IT, or engineering, then you need the complete Python Bootcamp course on Udemy. These videos and practice exercises help you learn the fundamentals and so much more. You can create a career-ready portfolio with advanced techniques taught by top-rated instructor Jose Portilla. And with anytime, anywhere learning, it fits your schedule. So get this course and code on. Minister Dhami and Union Minister VK Singh now getting ready to address the media on what happened in the last few hours. There was a briefing by the NDMA. Lieutenant General Hasnain addressed the press and said that, look, we are hopeful. There are no barriers, but it might still take some time. 8:37 is the time when the 41st worker, the last of the 44 who were trapped, was pulled out safely. And viewers, let's take a moment to salute the resolve of those who were trapped, and also let's laud the resilience of the rescue workers who pledged to pull them out safely. And on the extreme left, you have the Chief Minister there along with Union Minister VK Singh personally monitoring, supervising the last few moments of the rescue operations where these workers were pulled out. The Chief Minister there standing all throughout till the last person actually went inside the ambulance. They are all safe, physically fit, and the government or the administration agencies, they do not want to take any chance, which is why they're being shifted to the nearby health center, which is about 30-35 kilometers from this rescue site. Chinyali Saur Community Health Center is where these people are headed. There is a green corridor. Like I said, the Uttarakhand police ensured that there are no barriers inside, so it should take this convoy of ambulance about 10-12 minutes at the max to reach the health center. Reactions now coming in. बहुत दुआ मांगी है, इसलिए ये नतीजा में पहुंचा है, एक खुशी हमको मिला है। आपसे ज्यादा आपके जो गाँव के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। बहुत सब लोग खुश हैं। इतने दिनों से टेंशन चल रहा था, वो उसमें कैसे आप जयदेव केमन आछो? इतने दिन में जो टेंशन चल रहा था उसका आज अंत हुआ।
एवं आज अभी खुशी का दिन आ गई, अभी से खुशी मिल गई, मेरे शरीर में जान आ गई था। मैं तो बहुत टूट गया था, इसलिए आज देखा जो हमारा लड़का का चेहरा, इस चेहरे से देख से मेरे शरीर में जान आ गई। अभी आपका जो वाइफ है वो उनका बीमार थे, इसके वजह से कि आपके बेटे के टेंशन में ऐसा है, वो बेटे के टेंशन में बहुत बीमार पड़ गया था। अब अभी तो ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर भी ले आया था। डॉक्टर वो बोला था कि इसके खाने के लिए खाने बंद कर देगा तो आपका ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम खिलाते थे, और थोड़ा सा ज्यादा नहीं खाता है, थोड़ा खा लेते और ORS खाता है, यही करता है। अभी गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि फाइनली जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतने दिनों से चल रहा था वो अभी निकल के आए हैं, कैसा लग रहा है? ये बहुत खुश लग रहा है, बहुत खुश लग रहा है। ये सरकार को हम धन्यवाद देता है, वो बहुत खुश लड़का है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो एज यू कैन सी, यू नो, his father, we were talking to his father, and as he just told us that it's, you know, it's a situation of happiness because after so many days his son has come out of the tunnel finally. He also said us that how his wife was falling sick under the stress and tension, but of course while we were talking to him there was also a point when his son has video called him, you know, after so many days after being trapped inside the tunnel. जी क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल VK सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। जी साहब इधर वंशीधर तिवारी। Now, the person that you heard first was the father of a laborer who was trapped in the Silkyara tunnel. Obviously, elated, more than elation, there was a sense of relief on his face, and he said, I just want to thank the government for ensuring that my son has returned safely. Now, the Chief Minister will be briefing the press shortly, but let's cut to Rakesh, who's joining us with more updates. ये इस वक्त की बड़ी खबर, और ना सिर्फ इस स्ट्रेच रोड पर आपको एम्बुलेंसेस का रेला दिखाई दे रहा है, बल्कि इस साइड में नीचे की ओर भी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी कई सारी एम्बुलेंसेस यहाँ पर रखी गई हैं, ताकि जैसे ही यहाँ से एम्बुलेंसेस देकर श्रमिकों को निकले और एम्बुलेंसेस को पीछे कर दिया जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, सभी 41 श्रमिक बाहर। This is a result of the relentless work by a plethora of government agencies, and it started with the SDRF, the NDRF, but soon all the agencies, including the Prime Minister's office, swung into action. The Prime Minister was constantly in touch with the Uttarakhand Chief Minister, who was briefing him. The Prime Minister also asked him, so said the Chief Minister, that the Prime Minister said that we should do everything we can to ensure that the 41 workers are rescued, pulled out safely. And finally, after 17 days of tireless effort by multiple agencies, finally smiles all around. We're all standing by to listen to the Chief Minister and Union Minister VK Singh as to what went in the last few hours, because this has been going on, like I said, for the 17. Okay, Union Minister Nitin Gadkari now. मजदूर फंसे हुए थे, वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया, और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है,
और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Nitin Gadkari, Union Minister, his ministry also not just involved in the rescue operations but also looks after highways and tunnel construction, said one important thing, that this is like a lesson for all of us, for all government agencies, and we will ensure that this does not happen anytime again in the near future. He also promised that a safety audit will be conducted of all tunnels. Now remember, the tunnel construction is also a debatable thing, when many people saying that why are you interfering with the Himalayan geology or environment or ecology. But viewers, we must factor in that this is an important tool as far as development reaching the far-flung areas of the country is concerned. Now, if we hesitate in doing this, our people, at least in the far-flung areas, will continue to suffer as they did in earlier times. Now, the government has some of the best institutions that study the Himalayan geology, and the methods of construction of roads and highways, also tunnels, are also advanced. So I'm sure this is a lesson for all the agencies. But there can be aberrations. There have been aberrations, and this is a learning curve for everyone. Private agencies were also roped in, and we heard some people who were associated with these private agencies, for instance,